Namaskar, good evening. You're watching News Hour at 9 and I am Swati Joshi. Ladies and gentlemen, as Bharat awaits the return of Lord Ram to his rightful abode after 550 years, is appeasement casting a shadow over Astha? Let's tell you why the INDI bloc today faces this charge. On one hand, Ram is being called a meat eater by opposition leaders. On the other hand, a Ram Bhakt is being hounded and branded an absconder by the Congress government in Karnataka. This has led to the BJP alleging that Vipaksh has put appeasement above Astha of billions. Let's tell you how the day began. After calling Ram a poll agent of BJP and a symbol of Hindu Rashtra, now comes another shocker from the INDI bloc. Sharad Pawar's leader Jitendra Avhad now asserts that Ram was non-vegetarian. This understandably has led to massive outrage from all quarters. When confronted, Mr. Avhad expressed regret, but he defiantly reasserts that even Valmiki wrote about Ram eating meat. Listen in to him shielding behind freedom of speech. राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम. शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा. तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत आणि आम्ही मटण खातो. हा रामाचा आदर्श. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला? कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहने पे कायम है बिल्कुल, इसको बिल्कुल कायम है. आप क्या भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है. ये राम भक्त नहीं है ना. लोग भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है, खेद व्यक्त करता हूं. लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है. इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं. मैं बोलता हूं, अभ्यास करके बोलता हूं, बेमतलब बात नहीं करता हूं. ये मेरी आदत नहीं है. मैं जो भी बात रखता हूं रेफरेंसेस के साथ रखता हूं. अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूं तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था. In fact, to back his claim, Jitendra Avhad has published two versions of translations from Valmiki's Ramayana, one by IIT Kanpur and the other by KMK Murthy of Ayodhya Kand, chapter 52, verse 89. Here, Sita is praying to Ma Ganga for a safe return to Ayodhya. The first version, translated by IIT Kanpur, says, "O Devi, after my return to Ayodhya, I shall worship you by offering 1,000 pots of nectar and food in form of meat." The second version, translated by KMK Murthy, says, "O goddess, after reaching back Ayodhya, I shall worship you with 1,000 pots of spirituous liquor and jellied meat with cooked rice." Essentially, both have Valmiki making references to meat being offered to the gods. But such was the outrage over his comments that there were protests across Maharashtra against Jitendra Avhad. While his INDI partner, the DMK, backed him, others like the JDU and Congress were forced to condemn. Listen in. Whatever he is living in the forest for 14 years as per the ruling of his father, he could not have prepared food with rice and other things. Maybe he might have consumed meat. भगवान राम के जीवन वृत्त की जानकारी क्या है, ये सब को कुछ नहीं है. मीडिया में बने रहने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं. इसलिए हमारा तो अनुरोध होगा कि इनको पहले रामायण पढ़ाना चाहिए. हमारे भगवान श्री राम हमारे आस्था है, हमारी भावना है, और कौन क्या बोलता है उसका इशू नहीं है, लेकिन किसी की भभूति भी नहीं है, इतना हम कहेंगे. Well, Times Now has accessed the police status report of the case that shows that the accused was never absconding. We're talking about a Ram Bhakt who has been targeted. The Bharatiya Janata Party has alleged that he is being targeted by the Karnataka government because he's a Ram Bhakt. Now, the police note, the police clearly were aware of the presence and the location of this Ram Bhakt. Not once or twice, but 5 times he gave Hazri to the police. Once in 2002, then a couple of times in 2003 and then in 2009. This means that the police were well aware of his location and yet tagged him an absconder. Listen in. So from time to time, it is a routine police procedure that in all such long pending cases, we make efforts to trace the accused. As outcome of our effort, in total 37 cases, we were successful in
securing the absconding accused. And for us, it is just another riot case in which the accused was absconding and whom we have secured along with the absconders in other cases. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರ್ಯಾರೇ ಆಗಲಪ್ಪ ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ನೀನು ಅದು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವರು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಬೇಕು? Well, today when confronted, the police commissioner claimed it was a case of an absconding accused finally being arrested. Listen in. The original statement was that he was absconding, no ma'am. That's the reason, because if he's appeared before the police for good behavior in these 3 cases, that means the police were aware about where he is, right? See, this particular case, which was pending since 2006, which is a LPR. LPR is a long pending report. And usually what happens, like whenever there is an LPR, the person has to be produced before the court. Yeah. That process was not completed, and that was completed. And the way Ram is being insulted by India partners and a Ram Bhakt is being hounded by the Congress government, this has led the BJP to claim that appeasement has blinded the opposition. Let's listen to BJP reactions. देखिए, वास्तविकता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी सुंदर कार्य हो रहा हो उसमें विघ्न डालकर ही संतोष उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष वाले जो सदा सर्वदा से भव्य श्री राम मंदिर के विरोध में रहे थे, ये अंतिम चरण में भी विघ्न डालकर विघ्न संतोषी बनना चाहते हैं। परंतु अब देश की जनता ऐसे किसी विघ्न संतोषी के साथ नहीं है। वही पुराना बहाना, वही पुराना तराना, वही पुराना अफसाना जो हकीकत नहीं बन पाया है। तो ये लोग जो लगातार बोल रहे हैं और उसके बाद जबकि ये असफल भी हो रहे हैं, तो मैं इसके लिए भी वो पंक्ति बता देता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में बोली थी। ये राम मंदिर के विरोध की और मुस्लिम तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर जो मंजिल पाने की कोशिश में हैं, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला। ये इस तरह के जो प्राणी लोग हैं, अगर कहीं ये रावण के समय में होते तो रावण की सेना के साथ ही होते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शुरू से ही जो है विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल क्रूर कम्युनल करतूत के कवच बने हुए थे। और आज जो है वो जब राम मंदिर का मामला आया तो उसमें अवरोध पैदा किया न्यायालय में जो है। तो जैसे जैसे दिन आ रहे हैं राम जन्मभूमि पर, श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, तो वैसे वैसे जो है इनके प्राण निकल रहे हैं और इस तरह के जो है वो बहकी बातें और बेसुरी बातें कर रहे हैं। Well, all these reactions bring us to the legitimate question: why put appeasement over Astha? Let's open this up and go across to our guests. You're watching the News Hour first. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, we have a big panel tonight. We're joined by Sanju Verma, National Spokesperson of the BJP. We have Ishkaran Bhandari, Advocate of the Supreme Court. Mohammad Tariq Khan, National Spokesperson, Samajwadi Party. Kanchana Yadav, Spokesperson, RJD. Lokesh Jindal, Political Analyst. Waris Pathan, National Spokesperson, AIMIM. And Dr. Seema Malik, Spokesperson, NCP. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर सीमा मलिक, सबसे पहले सवाल आपसे, क्योंकि ये जो बयानों का सिलसिला चल रहा है उसमें ताज़ा बयान जितेंद्र आभाड़ की तरफ से आया है। वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी तक लॉजिक पर बात नहीं होगी, केवल भावनाओं पर बात होगी। तो क्या वो नहीं जान रहे थे कि जब स्टेटमेंट देंगे तो भावनाएं आहत होंगी? एक दूसरी बात, क्या रेलेवेंस है, क्या लॉजिक है उनके बयान में, क्योंकि देश में ऐसी कोई बहस नहीं चल रही है कि राम क्या खाते थे। आवाज सही आ रही है? सीमा मलिक जी, बंद हो। क्या अब आप मुझे सुन पा रही हैं? आई कांट हियर यू जी, थोड़ा फर्स्ट पार्ट सुना मैंने, उसके बाद का ठीक है। अगर अब आप मुझे सुन पा रही हैं, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेलेवेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट? क्या है जितेंद्र आभाड़ के स्टेटमेंट के पीछे कि राम क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे? कॉन्सिक्रेशन से पहले इस बयान का क्या मतलब है?
Good evening everyone. See, first of all, I would like to say, I just want to clear it very politely. I am telling you this thing, that this is a statement by an individual, and this is not the official stand of our party. So this I want to make you very clear. And see, he has extended his apologies also to the people, and he said very that he didn't want to hurt anybody. So. Anybody's sentiments, and I just want to tell you this thing, say that we also believe in Lord Ram, and we have got immense faith in Lord Ram. There are many people in our party who believe in Lord Ram. We also pray like every normal Indian. So has anyone from the party Indian who believes in Lord Ram and the faith and the Hindu Astha condemned Mr. Jitendra Avhad? Has anyone pulled him up? You people. See, we are not here to pulling people. I'm just telling you my official stand of my party. I am an official spokesperson of the party, and I am telling you the official stand of the party, that this is not the party's statement. What is party statement and on? I'm not going to the what technical is party details statement on Jitendra Avhad saying Ram was a meat eater? See, I am not going into the technical details. I am not some sadhu, mahatma or anything, or I am not a party stand. I'm not asking you this question. I tell you. No. I am not asking this question. I am not going to comment. No, I'm asking about this. The party stand. Since you said this is an individual comment, this is not the party stand. India Alliance is anti-Hindu and we are anti-national. This is completely wrong. Ma'am, I think you should go. I think you should go through the statements. I think you should go through the statements that have come in from some in the opposition. And in fact, the JDU and Congress have completely. One second, JDU and Congress have completely distanced themselves from Mr. Jitendra Avhad. I want to bring in Sanju Verma. So what is it really? Why is the opposition, according to you, indulging in this slander? Everything from the consecration to the construction, and now Lord Ram himself, everything is being questioned. Swati, you gave a brilliant introduction. If I may add to that, if you read the Ramayana or the Mahabharata or Bhagavad Gita, you will see that most of the prominent protagonists, their surname is never mentioned. Lord Ram का surname कहीं भी mention नहीं है in Ramcharitmanas. If you read the Bhagavad Gita, you will never see the surname of Arjun or Dhritarashtra or Nakul or Sahadev, so on and so forth. So for Jitendra Avhad to say कि Ram is a Bahujan, then saying Ram is a Kshatriya, भाई साहब आपने कौन सी Ramcharitmanas पढ़ी है? Because you said you've done thorough research and you did not make this statement, though you later apologized, but it was a reluctant apology, which means nothing. So point number one, the surname of Ram has never been mentioned, though it is said that Ram belonged to Treta Yuga and his ancestors like Raja Harishchandra belonged to the Satyug, and hence Ram ke saath Chandra surname lagta hai, but even that is up for debate. And then there are some people who believe that Ram, by virtue of being the 7th avatar of Vishnu, and in Jain texts he is said to be the 8th avatar of Balbhadra, by virtue of that he belongs to the Suryavanshi Kul. Be that as it may, whether Maryada Purushottam Ram belongs to the Suryavanshi Kul or whether Chandra is his surname, that is why we call him as Ram Chandra ji, that is not material. What is material is this, Swati. Ever since it was decided that 22nd Jan is the date of the consecration and the inauguration of the Bhavya Ram Mandir, the opposition has had sleepless nights. इनके लिए ये पूरा राम मंदिर का जो किस्सा है, because I can't find a better analogy, so bear with me please. ये इनके लिए दिल्ली का लड्डू जैसे हो गया, ना तो इनसे ये राम मंदिर वाला जो consecration है, ना तो ये निगल पा रहे हैं, ना ये उगल पा रहे हैं. You mean शादी का लड्डू? शादी का लड्डू, yes, you corrected me, thank you for that. So इनके लिए अभी ये राम मंदिर की जो पूरा जो सागा है, ये शादी के लड्डू समान हो चुका है, because if they agree that yes, we do believe in the civilizational legacy that has been resurrected thanks to the inauguration of the Bhavya Ram Mandir on 22nd January, then they are completely aligning themselves with the BJP so-called majoritarian agenda, because आज तक ये BJP majoritarian है,
यही बात ये दोहराते रहे हैं, इसकी दुहाई देते रहे हैं। ना इस से कि हम तो राम भक्त है ही नहीं, हमें तो राम मंदिर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तब 80% जो देश की जनता अपने आप को राम भक्त मानती है, वो तो ऑपोजिशन को दरवाजा दिखा देगी। नॉट दैट द ऑपोजिशन स्टैंड्स एनी चांस। सो दैट इज व्हाई आई थिंक दीस पीपल आर इंडल्जिंग इन व्हाट अबाउट इट। बट आई विल जस्ट से वन थिंग specifically, because I always say the devil is in the details, and I will not engage in rhetoric. Jitendra Ahwag, and since I come from Mumbai, Maharashtra, I have to say this to you. If you recall, Swati, barely a few months back in April 2023, there were Ram Navami related riots in Howrah, in Hooghly, in Uttar Dinajpur, in West Bengal. जितेंद्र आहवाग का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। शरद पवार की एनसीपी का कोई लेना देना नहीं था। बट जितेंद्र आहवाग मेड अ स्टेटमेंट सेइंग दैट राम नवमी और हनुमान जयंती मनाने की जरूरत क्या है। दीज आर फेस्टिवल्स व्हिच प्रमोट communal disharmony and they propagate the BJP's majoritarian agenda. ये जितेंद्र आहवाग का documented statement है। So you're saying this is not the first time that he said something like that. But I want to bring in Varis Pathan as well. Varis Pathan, you know, it's not just about Jitendra Ahwad's statement or the Ram Bhakt who's being hounded in Karnataka, for which I'll go across to Mr. Jindal. But according to the Bharatiya Janata Party, there's fear mongering happening as well. माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है. Mr. Owaisi said, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं मुस्लिम समुदाय के कि मस्जिदों को बचाकर रखें. Just before the consecration ceremony, why are the opposition leaders indulging in this? कौन माहौल खराब कर रहा है? मस्जिदों को बताने की जरूरत क्यों आन पड़ी है? ये fear mongering है according to the Bharatiya Janata Party. How do you respond? Well, who's doing fear-mongering, incitement, polarization? Who is using such kind of derogatory words against Lord Ram? Or who is insulting the Sanatin Dharma? Or who is insulting the Hindu religion, traditions? They are, let me name them, Stalin, Maurya, Jitendra Ahwad, Tejasvi. They all are practicing Hindus. Show me a single Indian Muslim using such kind of derogatory language or words against Lord Ram or against the Sanatan Dharma. Recently I am speaking about. None. That is why I say Muslims are peaceful people. Islam is a peaceful religion. The BJP is trying to create hatred and communal divide among the two parties. What have they done now? A simple ceremony. They have made it into a political event. I don't say this. Puri Shankaracharya, he is your big person. He is a Mahaguru. He clearly said that he won't be going there. What he will do there in this Pran Pratishtha thing? He said Modi will be doing that. Modi is bringing politics into Dharma. What he will do, the Pran Pratishtha, what he will do there? He will just go there, will he clap? They are not going there. So what does the BJP wants to give to the nation? This is just polarization. Okay, but you haven't responded to what Mr. Owaisi said. Swati, which is very important to be noted. Ji. What Owaisi Saab said was truth and fact, reality. He said that we have already lost our one masjid and telling the Muslim youths that please go to the mosque, pray namaz, offer, pray Quran, give azan. Otherwise, we have lost our one mosque by they have cheated us. We will be losing our other. What is this incitement? Is there any threats given? If this you think that incitement, we will do this every day. This is we are telling the people, informing them. Nowhere. Incitement is what you know. When the Maharashtra Home Minister says that he was very much present there, when the Babri Masjid was demolished, and is boasting that, that is incitement. Varis Pathan, he's trying to incite since people. you're questioning the Prime Minister's presence, since you're questioning the Prime Minister's presence, Mr. Owaisi has the right. Mr. Owaisi has the right to tell people that मस्जिदों को बचाकर रखना होगा, वहाँ हमें रोज नमाज अदा करनी होगी. Prime Minister का कोई faith नहीं है? The Prime Minister has no right to be present there on the consecration day? No. Let me tell you. The BJP senior leader Subramaniam Swamy and others have clearly stated that the Pran Pratishtha, as per the Hindu mythology, a single person cannot there. He has to be a couple. Modi should not go there. This is a BJP leader. So personal, let me ask a simple question. So Pran Pratishtha is being done by the priests, sir. जो साधु हैं मंदिर में पुजारी है प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि विधि प्राण प्रतिष्ठा की उन्हीं लोगों को पता है. They will be doing प्राण प्रतिष्ठा. Mr. Varis Pathan. Allow me 10 seconds. Okay, 10 seconds. Just Okay, 10 seconds. seconds. 10 seconds. 10 seconds. Simple question.
One more very pertinent question I would like the BJP spokesperson and the others to reply to me, that the entire issue started out of Ram Lalla's मूर्ति प्रकट हो गई उसके ऊपर. I'm asking a simple question. The nation is asking a simple question. Where is that मूर्ति of Ram Lalla जो प्रकट हो गई थी? Why they are not using that मूर्ति reiterating there? the question that Digvijay Singh asked, Ishkaran Bhandari. Reiterating the question that Digvijay Singh has asked. Swati, can I quickly rebut? He asked. Yes, I want to bring in other panelists and I'll I'm asking the nation is Swati, asking let the us see question. what is happening. Swati, now, yes, Swati, a historic moment is going to happen on 22nd January, and there is a lot of frustration in the ecosystem which we did not want this day to occur, which was opposing it to thin nail, which created laws to oppose it, which argued in the Supreme Court that this be decided after 2019. And the problem is not with the Prime Minister going there. You remember what the first Prime Minister of this country, called Pandit Jawaharlal Nehru, said when Somnath Mandir was to be rebuilt, that it is Hindu revivalism. He destroyed the career of Mr. K.N. Munshi, a cabinet colleague. He wrote to the then President Dr. Rajendra Prasad not to go. After 47, there was this amazing definition of secularism in which anything Hindu was to be ignored, not to be celebrated, was to be denigrated, was not to be respected, was not to be given its rightful place. Even though you went as far as in 1991 onwards to create laws like places of worship, which were to stop Hindus from claiming their right on mandirs, which were destroyed with utmost barbarity. But you created laws to stop that also. Okay. Unfortunately, those laws were so pathetically drafted that Allahabad High Court recently said they don't apply to Gyan Vapi, they don't apply to, and in other cases of Krishan Janamabhoomi. So those laws are also in dispute. But why stop there? Bombay blast. Today you have one NCP statement. It is a matter of record that then Chief Minister, Mr. Sharad Pawar, even though 12 bomb blasts occurred, created a 13th bomb blast in a Muslim-dominated area, completely fake news, to again take away the attention that it was a targeted bombing done in Hindu areas. Probably the NCP spokesperson will have no comments on this also, because we are having a debate on what an NCP minister says, but we suddenly hear that we have no comments on that to make. What is the action being taken on this person? Hindus are a peaceful community, so you will not see anybody on the road shouting "Sar tan se juda, Sar tan se juda." It should not be shouted. You will not have anybody asking for public hangings, which should not be asked for. But what will a political party take action on a minister who makes a statement like this? And if you do not take any action on him, then of course you endorse his statement. Then you stand with him because you are not taking any action on that person. All right. This is the reality. When So you're saying the reality is appeasement is the reason behind these comments coming in from the leaders in the opposition. Just 10 seconds. Okay. 10 seconds, Swati. The final thing I want to say, the problem is they do not want a holy, pious, celebratory occasion to go out without controversy, but try as they will. Even a Ram Mandir will happen, even Gyan Vapi will happen, even Krishan Janamabhoomi will happen, and each and every temple which has been destroyed will be reclaimed. Okay, see, Ram Temple has already happened after the Supreme Court's verdict. The rest are pending. Sub judice matter. So I will not take comments on that, but let's stick to the topic. Mohammad Tariq Khan, like I said, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली, जिसके बाद मंदिर बनाया गया, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा वहां पर हो रही है. तो ऐसे में why are these statements being given to hurt the sentiments of Hindus? और उनकी आस्था के साथ ऑपोजिशन के कुछ नेता क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन होने के नाते आपका क्या स्टैंड है? देखिए, वी बिलोंग्स टू द पार्टी ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ राम मनोहर लोहिया जी, who dreamed about Ram Mela, and we believe and we consider that all type of respect, all respect should be given to all type of religion. We do not support any type of statement being given against the religion, any type of religion. Just a few spokesperson back, BJP spokesperson said that Lord और भगवान की जो जाति है वो डिफाइन नहीं की गई. ठीक, तो हनुमान दलित हैं, योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं. डू योगी आदित्यनाथ possess this, क्योंकि वो बीजेपी के हैं और योगी भी हैं. He possess all type of freedom to say anything or define the भगवान और the Lord as a दलित. उसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा.
इनके संजय निषाद, इनके समर्थक उत्तर प्रदेश में, वो कह सकते हैं कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं थे. इट्स ऑल राइट. That means, and it equally implies that BJP or the RSS people have all the right to say anything worse or anything bad about Lord, Bhagwan, Ram, and everybody, and anybody else. If they'll say something or after that they'll apologize, and well, this will not be considered in new. Okay, but the apology was not for the statement, because he also published and produced. Produce is the right word. Produced reports, translation of 2 versions. So he's sticking to his stand. He is apologizing for hurting sentiments, not for what he said. But Sanju Verma, the allegation I believe that Mr. Khan is trying to level is that BJP is being, extremely sensitive and looking at every statement as anti-Hindu. Why? Swati, I will not allow today the opposition to digress from the topic of the debate on your show. And I first have to say this, that everybody who accuses the Prime Minister and the BJP of appropriating Maryada Purushottam Ram's legacy, तो मैं ये कहना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था. It has taken us more than 75 years, and it has taken us actually more than 495 years to finally bring to fruition a Bhavya Ram Mandir, and let us be under no illusion. This is happening under the leadership, under the aegis of Prime Minister Narendra Modi, or Narendra Modi is more secular than most of us on this panel, because ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए भी गए थे 2019 में. ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो अजमेर दरगाह पर जाकर चादर भी चढ़ाते हैं. ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो 2021 में पोप को मिलने वैटिकन भी गए थे. The last time somebody had met the Pope was 30 years back prior to 2021. It was Atal Bihari Vajpayee. ये वही नरेंद्र मोदी है जो 2023 में अल हकीम मॉस्क पर जाते हैं इजिप्ट में. And this mosque, Al Hakim Mosque, by the way, has been renovated by the Bora Muslim community of India under the aegis of Narendra Modi. ये वही Narendra Modi हैं who from the ramparts of the Red Fort 2 years back said that let us celebrate with pomp and gaiety the 400th birth anniversary of Guru Tegh Bahadur. ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो अफगानिस्तान से गुरु नानक का ग्रंथ लेकर आए थे. जब हाँ ठीक है. तारिक खान जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? तारिक खान जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? She's trying to say that 10 seconds. Swati, can I take two panelists have not even spoken. Sanju Verma, दो panelists ने अभी तक अपनी बात भी नहीं रखी है. Quick rebuttal from Mr. Khan. I have to focus to Kanchana Yadav and Lokesh Jindal also. Mr. Tariq, please be quick in your rebuttal. Thank you. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नए सेकुलर नेता होंगे आने वाले टाइम में? बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ये डिफाइन करना चाहते, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ेंगे वो क्या? No, he is not making you. I am giving you an opportunity to rebut. जी, मोहम्मद तारिक खान. Swati, you gave me 10 seconds and then I was not even allowed to make my point. Sanju Verma, 2 panelists have not even spoken and I have not given a second chance for rebuttal to anybody so far. Mohammad Tariq Khan, please. नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी या बीजेपी की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर रही है कि वो अब सेकुलर हो जाएंगे, या जिनके जो हार्डलाइनर्स थे दे आर कोशिश कर रही है? अगर ये कर रही है, वी आर वेलकमिंग देम. हम वेलकम करेंगे. वेरी गुड, अच्छी बात है. का सर्टिफिकेट आपसे हमको जरूरी नहीं है. यू आर फ्रॉम द समाजवादी पार्टी. आपके मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर, निहत्थों पर गोलियां चलाई थी. यहाँ बैठकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जबकि कल्याण सिंह ने गद्दी छोड़ दी थी. ठीक है. Since you've mentioned the car sevaks, Lokesh Jindal, I want to bring you in. Because another incident that came to light in this entire series of Sanatan slander is the manner in which the Karsevak has been hounded in Karnataka. The police report note has now made it absolutely clear that the police knew about his location, then why call him an absconder? And 31 years later, all of a sudden अब याद आ रहा है कि इनके खिलाफ हमको एक्शन लेना है. Yes, Swati, it was in 2022 that the Karnataka High Court, it had asked all the courts to expedite all the long pending cases. Subsequently, in 2023, September, we had the additional DGP issuing orders to all police stations in Karnataka that all the long pending cases must be investigated and they must be hurriedly, they must be brought to disposal, whatever is the case pending. And 130,000 cases
130,000 cases were investigated and subsequently they were disposed of. Now, Ishkaran must be knowing that as per the Code of Criminal Procedure, it is at the behest of the investigating officer to undertake an arrest if he finds that if he is suspicious of while carrying out the investigation. And this person, Shrikant Pujari, is a serial offender. He was already an accused on 5th of December 1992. He's been booked for illicit liquor. This person has been kept under preventive detention a lot many times. He has been accused of having gambling, matka, and all forms of illegal activities he's involved into. And I don't understand BJP. Why is it thinking that being a Kar Sevak, he's above law? I mean, law should not apply to him. It is very shameful that BJP has come down to such a level that it is siding with the criminal in the garb of Lord Ram. Okay. No, since you mentioned Ishkaran Bhandari, and Ishkaran Bhandari understands, he understands the legal procedures and routine procedures. Ishkaran Bhandari, the police today are saying it's a routine procedure. The government in Karnataka is saying, it's the BJP which is linking this to the consecration ceremony and Ram temple, not us. We're just following a routine procedure. Swati, it is not routine to arrest anybody. There have to be adequate reasons by which you arrest somebody. And one of the grounds in our old pending cases, if an accused has been absconding, has evaded justice, and the police has done raids and then have started a proceeding to declare him as an absconder, which is a complete legal proceeding. Now, what your report shows that he had given an undertaking, what your report shows that he was available in the area, what your report I'm seeing right now, even right now on the screen, is that he was fully compliant and he had appeared in police station also. Was he given so an when you are appearing before the... bail? 1 second, don't interrupt me. If he was not given an anticipatory bail, on what basis are you saying that the investigating officer cannot arrest him? Let me, don't interrupt me. Now can I finish my point? Don't interrupt me. So when somebody is not an absconder and he has been coming before the court, if you have to arrest somebody, that's in the early days of the investigation if he does not take anticipatory bail. When your ground of arrest becomes that he's an absconder and he's in actuality not an absconder, then that obviously will raise questions as to what has happened. Let us wait for 2 days. It will go to court and the court will come to the justification whether the arrest was rightfully done or the arrest is not rightfully done. But if the ground of arrest is an absconder, then when the accused has been appearing before the police station, that is not a relevant ground. Okay, you're saying there are flaws in the routine procedure as well, which is being cited by them. Let me quickly bring in Kanchana Yadav as well. Kanchana Yadav, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर की जरूरत है या अस्पताल की जरूरत है. पहली बात, क्या वो ऐसा ही बयान दूसरे धर्मों और दूसरी चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हो, उनको लेकर के भी देंगे? एक. दूसरा, ये कहने के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर किसी को अस्पताल की जरूरत है तो वो अस्पताल जाएगा, किसी को मंदिर की जरूरत है तो धर्म के लिए वो मंदिर जाएगा. Sati ji, Ram is not a political issue. Ram is our faith. He is in our heart. है ना? जिस तरीके से बीजेपी इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रही है, हम भी वही कह रहे हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन, लेट्स टॉक अबाउट द जॉब, लेट्स टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, लेट्स टॉक अबाउट द हंगर इंडेक्स. बट does बीजेपी हैव अदर नैरेटिव देन द राम टेम्पल? वही तो हम भी सवाल कर रहे हैं कि अगर आप एंकर हैं और मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, व्हाट डू वी नीड? हमें एक कैमरा चाहिए, आपको अपना प्लेटफॉर्म चाहिए. तो राम इज आवर फेथ, राम सेपरेट है. लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इसको पूरा भुनाने पर लगी है, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम इस देश के या जो लोगों के फेथ जो मानते हैं राम को, उनके संरक्षक नहीं है, बल्कि बीजेपी भगवान राम की संरक्षक है. तो इस तरीके के डर्टी पॉलिटिक्स में we literally refrain from engaging this kind of dirty politics which BJP is doing right now. अगर कॉन्सिक्रेशन हो रहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो लोगों के आस्था की बात होगी, लोगों के धर्म की बात होगी, वो अपनी भावनाओं की बात रखेंगे, तो इसमें गलत क्या है? एक. दूसरा, अगर अस्पताल सबसे ज्यादा जरूरी है और मंदिर नहीं, क्योंकि आप बाकी पैरामीटर्स को गिनवा रही हैं, तो तेजस्वी यादव खुद क्यों मंदिर जाते हैं? महाबोधि टेम्पल वो क्यों गए? चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी क्यों मंदिर जाते हैं? वो क्यों नहीं स्कूल का दौरा करते, कॉलेज का दौरा करते, अस्पतालों का दौरा करते?
हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, किस भगवान की पूजा करते हैं, हमारी क्या आस्था, उसको हमें टीवी पर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अदर देन राम टेम्पल इस समय क्या बोल रही है? नहीं तो कंचना यादव जी, कंचना यादव जी, आप मान रही है कि आप ये कह रही है कि सुबह, ठीक है, आप ये बात मान रही है कि वो किसी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आस्था किसी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप नित्य कर्म में भी उसको जोड़ रही है कि सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उतना ही जरूरी है ना फिर मंदिर उन लोगों के लिए जो उसमें विश्वास रखते हैं, तो फिर उनका मखौल उड़ाने का क्या मतलब है? देखो, आप शायद तो पूरा उनका इंटरव्यू या जो वीडियो है उसको नहीं सुनी होंगी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम किसी भगवान को या किसी टेम्पल के अगेंस्ट हम नहीं बोल रहे हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन। ये बहुत कन्वीनियंट है, ये बहुत कन्वीनियंट है ये कह देने के बाद, ये बहुत कन्वीनियंट है कह देने के बाद कि नहीं ये बहुत कन्वीनियंट है। संजू वर्मा, ठीक है, बीजेपी ओके, संजू वर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस एलिगेशन। इट्स नॉट जस्ट आरजेडी बट अदर्स आल्सो सेइंग कि बीजेपी 2024 के मद्देनजर सब कुछ कर रही है, कॉन्सिक्रेशन हैपनिंग जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शंस, आप भुना रही हैं। 1989 पालमपुर रेजोल्यूशन के द्वारा the Ram Mandir issue was brought onto the center stage of the Indian political landscape thanks to the BJP. And 34 years later, I'm very proud, not only as the national spokesperson of the BJP, but as a practicing Hindu, that under the aegis of Prime Minister Narendra Modi, who unapologetically wears his Hindutva on his sleeves, despite retaining his secular credentials, we will have the consecration of Ram Lalla in the Bhavya Ram Mandir on 22nd January. अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं आरजेडी के, ये शायद बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये क्या कहते हैं? रामचरितमानस इज अ होक्स, ही सेज महाभारत इज अ होक्स, ही सेज प्रभु राम इज अ होक्स, ही सेज लॉर्ड कृष्णा इज अ होक्स। ये प्रोफेसर चंद्रशेखर के क्या वक्तव्य है, इसको आप डर्टी नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे? दोज आर नॉट पर्ल्स ऑफ विजडम मैडम। फिर मैं याद दिलाती हूं आरजेडी के कर्ता धर्ता जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह, who had to forego his ministry, he was the agriculture ministry after corruption charges were leveled against him. Sudhakar Singh has abused Hindus and Sanatan Dharma, and he endorsed Udayanithi Stalin, saying कि यदि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का, if he has equated that with dengue or leprosy or AIDS or other unspeakable diseases, तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? ये आरजेडी के कर्ता धर्ता जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का वक्तव्य है। और आप यहाँ बैठकर कह रही हैं कि हम प्रभु राम में आस्था तो रखते हैं, और हम जब कोई प्रभु राम की आस्था की धज्जियां उड़ाएगा, हम अपने मुंह पर कंचना यादव, विल यू आल्सो से कि ये व्यक्तिगत बयान थे, कन्वीनियंट आप पोजीशन लेंगे कि ये व्यक्तिगत बयान है, पार्टी साइडलाइन करती है अपने आप को? देखिए, अभी संजय निषाद जी भी हैं इनके बीजेपी के साथ में, उन्होंने भी कुछ बोला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को उनका भी जाकर बयान सुनना चाहिए। और दूसरे, खुद कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते कि हम हिंदू, हमारा फेथ है, हम हिंदू पर राजनीति नहीं करते। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक दिन रात, इंक्लूडिंग मीडिया, लिटरली इंक्लूडिंग मीडिया, मैं किसी भी ऐसे डिबेट पर नहीं जा पा रही हूँ जहां पर लिटरली एजुकेशन के बारे में बात हो, अदर देन राम टेम्पल, अदर देन द राम टेम्पल। दिन भर आप कहोगे, दिन भर राम टेम्पल पर डिबेट, दिन भर राम टेम्पल की बात, और बोलोगे कि विपक्ष जो है राजनीति कर रही है, विपक्ष अपमान कर रही है। भगवान राम इतने छोटे नहीं है कि जिनका अपमान हो जाए। अरे अपनी चाल और ऐसा कह करके कंचना यादव जी, आप जो है अपनी तरफ से क्लीन चिट लोगों को दे रही है कि मन में जो आए आप बोल दीजिए, क्योंकि भगवान राम तो इतने बड़े हैं कि उनका इंसल्ट तो हो ही नहीं सकता। मोहम्मद तारिक खान, आप बताइए कि क्या ये बात किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को गवारा होगी? क्या आप ये कहकर के आसानी से बच पाएंगे कि भगवान जो है वो इतने बड़े हैं सबसे कि किसी भी बयान का उन पर कोई असर नहीं होता, उनका इंसल्ट नहीं होता, इसलिए जो मन में आए बोलिए? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, दिस इज नॉट राइट। और भगवान की रिस्पेक्ट सभी को करनी चाहिए, हिंदुस्तान में सबको करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी जब लिस्ट तैयार करती है कि किन लोगों ने क्या कहा, तो योगी आदित्यनाथ का नाम ऐड कर लीजिए। मैम, आप नहीं कर रही हैं, आप डर रही हैं, यू आर स्केयर्ड, क्योंकि वो आपके मुख्यमंत्री हैं। हनुमान दलित थे, किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ ने कहा था। याद कर लीजिए, मैं याद दिला रहा हूँ, ऐड कर लीजिए, बीच में नहीं, नॉट इन This man has not answered one question. Okay. निहत्थे कार सेवकों पर आपके मुलायम सिंह यादव ने गोली
योगी आदित्यनाथ is a part बचाने के लिए BJP जबकि बीजेपी के कल्याण सिंह ने प्रभु राम के खातिर अपनी गद्दी का त्याग किया। Okay, I want to quickly bring in Kanchana Yadav and Lokesh Jindal. We just have, I believe, a minute and a half left before we wrap up. Kanchana Yadav, RJD की तरफ से तेजस्वी यादव ने पहले अस्पताल का जिक्र किया, आप कह रही है एजुकेशन की बात नहीं होती। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जब तमिलनाडु गए तो भारतीदासन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में भी गए थे, जहां छात्रों को उन्होंने एड्रेस किया था। तो वो क्या प्रधानमंत्री किसी मंदिर में या धर्म का प्रचार करने गए थे? हाँ, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने लोकसभा इलाके बनारस में भी जाएंगे, जहां पर IIT BHU, जहां की मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, वहां के एक लड़के के साथ गैंग रेप हुआ और गैंग रेप करने वाला इन्हीं के कार्यकर्ता IIT सेल के जो हैं वो पदाधिकारी 3 लोग। लेकिन क्या ये एक शब्द भी इस पर बोली है पूरे डिबेट पे? क्या उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डिबेट उस पर नहीं है? पहली बात डिबेट उस पर नहीं है। पहली बात डिबेट उस पर नहीं है। तो डिबेट इस पर क्यों नहीं होता? आप ये मत नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस पर डिबेट क्यों नहीं होता? आप एजुकेशन की बात कर रही हैं, अगर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसकी कैपेसिटी 30,000 है, अगर वहां पर गर्ल्स सुरक्षित नहीं रहेंगे, बिल्कुल मैम, जो आप कह रही हैं वो क्राइम है, उसको आप शिक्षा से मत जोड़िए, वो क्राइम है। ठीक है, जो आप कह रही हैं पॉइंट आपका कि ये इस पर बात होनी चाहिए, आज डिबेट का टॉपिक वो नहीं है। Lokesh Jindal, I have to wrap up, but very quickly, when will this slander end? Well, Swati, you know, in Ayurveda, there is a concept called Viruddha Ahar, Viprit Ahar. And Viprit Ahar is when two opposite ingredients are added, it leads to toxicity. Politics and religion are this Viprit Ahar. The moment these political parties like BJP, in order to gain political end, resort to blending religion with politics, it leads to toxicity. Okay, when you say this and BJP, that's what is happening that's now. Exactly when you forget about all the comments that have been made by the leaders in the opposition. Are they not mixing religion and politics? You know that the opposition leaders also stand accused of the same. I'm completely out of time for debate number 1, but people are watching, they're listening to each and every reaction coming in from all the political parties, and they will judge when the time comes. They will also judge on who is in fact insulting Hindu Dharma, who's insulting their faith, and who is involved and indulged in this slander. Thank you very much, ladies and gentlemen.